Hello dear students, I hope that you have covered lectures 1 to 3 of fuel topic, and in that lecture I am very much confident that you have learnt how to determine the gross calorific value and then followed by determination of net calorific value. Besides, you might have understood that how do we incorporate the corrections in gross calorific value, what is the construction of bomb calorimeter. Now, welcome to today's lecture, lecture number 4, wherein we will try to emphasize upon the analysis of coal. So, today this topic is very important because it involves the theoretical concept, the basic concept of various types of analysis of coal, and you have to understand this topic by watching this video. And then, accordingly, we will go ahead with the last lecture, which may be related to numerical problems related to all the lectures or lectures number 1 to 4 of the topic fuels. What do we mean by coal? So, all of us know that coal is regarded as a fossil fuel as it is formed from the fossilized remains of plants and animals, and it is the most important solid fuel formed by the combined action of high temperature and high pressure over vegetable matter over million of years. So there are two important things: that this is a fossil fuel and it is formed from the fossilized remains of animals and plants, and the another important thing is that this is the most important fuel which is formed by the combined action of high temperature and high pressure. Now if we talk about the chemical composition, you can see that it is highly complex organic matter having varying amount of water together with carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and non-combustible inorganic matter. So it consists of combustible and non-combustible inorganic matter. Now, when we consider the transformation of vegetable debris to coal, like what is the process of transformation of vegetable debris to coal, then we can see here that it is a two-step process. Now, in the first step, you can see here that there is a biochemical stage. Now, under this stage, as you know that it is also known as biochemical stage, there is involvement of microorganisms like streptococcus, micrococcus, and various other microorganisms. Now, due to the attack of these microorganisms, in the first stage of qualification, like you can see that the cellulosic plant material is converted into peat. So this is also known as biochemical stage. Now in the second stage, you can see that this is also known as chemical stage. And in this particular stage, the most important factors are chemical changes that are due to the fact that it involves high temperature, high pressure, and long time of the order of 10 to the power 7 to 10 to the power 8 years. Now, during this period, there is a chemical change in the peat. So you can see that the peat deposit buried under sedimentary deposits, they lose moisture. So the moisture is lost, and also they lose the volatile matter. So whatever moisture or volatile matter is present under the effects of high temperature and pressure, it is lost. And then another important thing is that you can see that the peat gets enriched in carbon content. Carbon content धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जबकि उसका ऑक्सीजन कंटेंट धीरे धीरे कम होता जाता है. So in this case, you can see that the spongy peat gets transformed into coal, and this is hard and brittle coal gradually, right? So what we have understood here, that during these two stages of qualification, like biochemical stage and chemical stage, first cellulose is converted into peat, and then finally peat is converted into coal. So this is a two-stage process, as you can see. How do we classify the coals? So coals are mainly classified on the basis of their ranking, and the ranking defines the degree of qualification. What is the degree of qualification from the parent material, wood? So when wood is converted into coal, as already we have discussed, that there is a gradual increase in the concentration of carbon and decrease in the concentration of oxygen and nitrogen. So in that way, we define the ranking of the coal. So as the concentration of carbon content increases, it is actually of the good quality, its quality increases. So the progressive transformation of wood to anthracite can be written as mentioned here: wood, peat,
lignite, bituminous coal, and then anthracite, right? So here in this diagram also you can see that it is the process of a transformation from wood, that is which is the starting material, wood to peat, lignite, bituminous coal, and then anthracite. So it is not a coal, and then it is brown coal, it is soft coal, and this is hard coal. So the best quality coal is anthracite, right? So as the content of carbon increases, you can see that there is a decrease in the content of moisture and decrease in the content of oxygen and nitrogen. So here there is a progressive transformation from wood to peat and then reaching up to anthracite. So and then there is an increase in the content of carbon and decrease in the content of oxygen and nitrogen. And likewise we can say that there is an increase in the calorific value of a coal. So analysis of coal is another important thing that we have to discuss. So how do we analyze the coal? Because the composition of coal varies according to the degree of qualification. So as we know that the coals are classified on the basis of their ranking, their degree of qualification. So we have to classify the coals and then we have to analyze the coal as well. So in order to compare the coals for the use of consumer, so as a consumer, if we are going to purchase the coal, then we have to analyze the coal. Analysis is carried out, and analysis is done in two ways. The first one is proximate analysis and the second one is ultimate analysis. Let us consider the proximate analysis first. Now, what do we mean by proximate analysis? So, first of all, it is very much clear to all of us, it should be very much clear to all of us that it is a very important analysis. It is an empirical but important analysis. And why is it known as proximate analysis? Because you can say that since the data varies with the procedure adopted, जैसे जैसे आप procedure adopt करते हो, different steps की process को adopt करते हो, वैसे वैसे data vary करता जाता है, and that is why it is known as proximate analysis. Now इसमें हम निकालते क्या है, analysis में क्या क्या steps involved हैं. So here you can see that it includes the determination of moisture, volatile matter, ash, and fixed carbon. So there are four important things which we have mentioned here. And what is the significance? This gives quick and valuable information regarding the practical utility of the coal and its commercial classification for industrial purposes. So, in summary, we can say that it is an empirical or important analysis. It determines the moisture, volatile matter, ash, and fixed carbon, and it determines the practical utility of the coal. So, if we have considered four important terms here, four important factors here: moisture content, volatile matter, ash, and fixed carbon. So we have to consider that how do we determine these content. So let's say if we start with moisture content, and obviously we have to start with the moisture content because this is the first step of proximate analysis. So how do we determine the moisture content and what do we exactly mean by moisture content? Let us see. So when a wet coal is exposed to atmosphere, the external moisture evaporates. जब आप किसी भी wet coal को आपको लग रहा है कि coal wet है और उसको आप moisture से free करने के लिए उसको अगर आपने environment में रखी है, atmosphere में रखा और उसको dry करने दिया, तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि वो dry हो गया है. But actually it is not so. In general इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ moisture रह जाता है. Like here you can see the apparently dry moisture is always present over there, right? So apparently dry coal contains some moisture. इसमें कुछ ना कुछ moisture रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं air dried moisture, right? So इस air dried moisture को determine कैसे करते हैं? Air dried moisture is determined by heating a known amount of coal what? Air dried, पहले उसको आपने air में dry कर लिया है to 105 to 110 degree centigrade. So we have to remember the temperature. So whenever we are going to determine the moisture content, we have to remember the temperature. So which is 105 to 110 degree centigrade in an electric hot air oven for about 1 hour. Right? So there are two important things here. One is temperature and the other is duration.
सो यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर हमने लिया है अबाउट 1 आवर। 1 घंटे तक गर्म करने के बाद सो वी कैन सी दैट इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम दी अवन। इसको हम अवन से बाहर निकाल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं डेसिकेटर में और उसका वेट ले रहे हैं। सो कुछ ना कुछ जो मॉइस्चर उसमें रह गया था एयर ड्राइड कोल सैम्पल में वो एलिमिनेट हो जाता है, वो इवेपोरेट कर जाता है, तो उसका ऑब्वियसली वेट कम होगा। सो लॉस इन वेट इज़ रिपोर्टेड एज मॉइस्चर कंटेंट ऑन परसेंटेज बेसिस। सो परसेंटेज बेसिस पे हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। सो फॉर्मूला हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने मैंशनड है। सो मॉइस्चर इज़ इक्वल टू लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल सैम्पल टेकन इनटू 100। सो सपोज अगर आपका पहले वेट था W1 और बाद में वेट हो गया W2, तो वेट लॉस हो रहा है, तो हम लोग W1 माइनस W2 करेंगे एंड देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लॉस इन वेट। ये लॉस इन वेट पहले आप निकालेंगे और फिर वेट ऑफ कोल सैम्पल जो आपने इनिशियली लिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दैट वे यू विल गेट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है कि हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस यही है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कोल में होगा उतना ही कम उस पर्टिकुलर कोल सैम्पल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करें, उसको डिटरमाइन करें और उसको रिमूव करें, या ऐसा कोल सैम्पल हम लें जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो या इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। I hope it is clear to everyone. So this is the moisture content. Now the second step is volatile matter. So it is a stepwise process. Remember, so first you remove the moisture content, you determine the moisture content, and then we have to move towards the volatile matter. So here you can see what do we mean by volatile matter. So volatile matter in coal consists of a complex mixture of gaseous and liquid products resulting from the thermal decomposition of the coal. So what is there when we talk about the volatile matter? So it consists mainly of combustible gases. combustible gases में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, मीथेन या और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और उसके अलावा नॉन कंबस्टिबल गैस हो सकती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें मेनली नॉन कंबस्टिबल और कंबस्टिबल गैसेज होती हैं। और ये ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है कि वोलेटाइल मैटर में मॉइस्चर कंटेंट इंक्लूडेड नहीं होता है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. So it means that after removal of the moisture content we are going to determine the volatile matter. तो पहला स्टेप होने के बाद हम इस स्टेप में आ रहे हैं जिसमें हम volatile content या volatile matter को determine कर रहे हैं, right? So that is why in the last point, fourth point, you can see here that we have used the term the dried moisture free coal sample, the dried moisture free coal sample which is left in the crucible in one. यानी फर्स्ट स्टेप में जो आपके क्रूसिबल में रह गया था आफ्टर द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर we are going to determine the volatile matter. So this dried coal sample, moisture free coal sample is then covered with a lid. इसको हम एक lid से कवर कर रहे हैं। ये आपने देखा यहाँ पर हमने lid लिया है। ये lid क्या होगा, ये vented lid होगा। So vented lid का मतलब क्या हो गया कि ये एक lid है और इसमें vents holes है, यानी कि इसके थ्रू evaporation हो सकता है। So इस तरह का हमने एक lid ले लिया and then प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, और इसको एक मफल फर्नेस में रखेंगे। यहाँ पर मेंशन किया मफल फर्नेस। अगेन द टेम्परेचर इज़ 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 7 minutes. So as I told you that we have to remember the temperature and the duration, up to what duration we have to provide that heat, provide that temperature. सो मॉइस्चर कंटेंट के डिटर्मिनेशन में आपने क्या लिया था, 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था। 1 घंटे तक आपने उसको गर्म किया था, जबकि इस केस में आपने लिया 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 minutes. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. देन द क्रूसिबल इज टेकन आउट ऑफ द ओवन, कूल्ड फर्स्ट इन एयर. पहले उसको एयर में ठंडा करेंगे, फिर उसको डेसिकेटर में ठंडा करेंगे एंड देन इट इज़ वेट अगेन, और उसका वेट ले लेंगे. एंड देन अगेन लॉस इन वेट इज़ रिपोर्टेड एज वोलेटाइल मैटर ऑन परसेंटेज बेसिस. सो कैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर is equal to, again it is similar formula, loss in weight due to removal of volatile matter upon weight of coal sample taken into 100. So here after the removal of moisture content you have to take the weight of that particular sample as the initial weight, और final weight जब आपने ये कर लिया, पूरा इस प्रोसेस को कर लिया, तो जो फाइनल वेट आ रहा है, सो उन दोनों में का डिफरेंस जो आएगा वो लॉस इन वेट आएगा. एंड देन वी हैव टू कंसिडर द वेट ऑफ कोल सैम्पल टेकन एंड देन मल्टीप्लाई
by 100. So this is the way, and we determine the percentage of volatile matter. And again, significance or importance, we must consider that presence of high volatile matter reduces the calorific value. जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही अगर वोलेटाइल मैटर या कंटेंट भी ज़्यादा होगा तो वोलेटाइल मैटर की वजह से कोई कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है. और उसके अलावा वोलेटाइल मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लॉन्ग फ्लेम्स बनेंगे और उसकी हीटिंग वैल्यू, जो फ्यूल सैम्पल है उसकी हीटिंग वैल्यू भी उतनी ही कम होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द वोलेटाइल मैटर एंड get it eliminated off. And the third step is ash, determination of ash. So what was the first step? First step was moisture content, the second step was determination of volatile matter, and the third step is this, which is the determination of ash. Now what is this ash? So कोल में बहुत सारे inorganic mineral substances होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं ऐश में बाय द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल. जैसे ही कोल का कंबशन होता है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐश यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, लाइम, आयरन ऑक्साइड्स एक्सेट्रा. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स में, एंड दीज फॉर्म दी ऐश. सो ऐश जो है वो रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाता है. और एंड में जो रेसिडुअल कोल है जो विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर, हियर यू कैन सी दैट द रेसिडुअल कोल इन द क्रूसिबल इन टू मीन्स सेकेंड स्टेप में जो आपने वोलेटाइल मैटर रिमूव करने के बाद जो आपके पास कोल सैम्पल बचा है उसको आप लेंगे. देन इट इज़ हीटेड विदाउट अ लिड इन दी मफल सर्फेस, ये मफल फर्नेस. जो फर्स्ट सेकेंड स्टेप में आपने एक वेंटेड लिड लिया हुआ था, जबकि यहाँ पर आप लिड को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल मैटर अभी भी रह गया हो या जो एवापोरेट करने वाला कंटेंट हो वो एवापोरेट हो जाए. एंड देन it is heated in a muffle furnace at 700 plus minus 50 degrees centigrade for about half hour. Now again you have to remember the temperature and the duration. The crucible is then taken out, cooled first in air, पहले एयर में ठंडा करेंगे, फिर डेसिकेटर में ठंडा करेंगे और उसका वेट लेंगे. ना यहाँ पर ये एक बार नहीं करेंगे, ये कई बार करेंगे. तो हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ये स्टेप हम तब तक करेंगे उसको 750 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे तक गर्म करेंगे, फिर उसको एयर में ठंडा करेंगे, फिर डेसिकेटर में ठंडा करेंगे, फिर उसका वेट लेंगे. और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि कांस्टेंट वेट हमें ना आने लगे. जब कांस्टेंट वेट आ जाता है यानी वेट और रिड्यूस नहीं होता है, तब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रेसिड्यू हमें मिला है वो ऐश है, और उस ऐश को परसेंटेज के बेसिस में हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. So in this formula you can see that percentage of ash is equals to weight of ash formed upon weight of coal sample taken into 100. So end में जो रेसिड्यू बन रहा है उसका वेट हमने ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया वेट ऑफ द कोल सैम्पल से और मल्टीप्लाई किया 100 से, एंड इन दैट वे वी गॉट द परसेंटेज ऑफ ऐश. सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, अगेन वी हैव टू कंसिडर ऐश जो है वो नॉन कंबस्टेबल मैटर होता है, और जो भी नॉन कंबस्टेबल मैटर होता है वो रेसिड्यू के फॉर्म में कोल में रह जाता है, जो कि हमेशा कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करता है. ये अगर कोई हम फर्नेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो होल्स होते हैं उसके पैसेज को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये इट रेस्ट्रिक्ट्स द पैसेज ऑफ एयर, और एयर नहीं जा पाती जिससे ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, रेट ऑफ कंबशन कम हो जाता है, एंड इवन इट मे कॉज द प्रॉब्लम ऑफ क्लिंकरिंग एंड डिस्पोजल. तो अगर क्लिंकर का फॉर्मेशन हो रहा है यानी रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है. सो इन दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऐश कंटेंट एंड इट्स रिमूवल देयर ऑफ. राइट नाउ fixed carbon, this is the last factor that we have to determine in the proximate analysis. तो proximate analysis में हम लोगों ने 4 टर्म्स यूज़ किए हैं या 4 स्टेप्स में हम एनालिसिस कर रहे हैं. पहला था मॉइस्चर, दूसरा था आपका वोलेटाइल मैटर, तीसरा था आपका दैट इज़ ऐश, एंड द फोर्थ वन इज़ fixed carbon. So let us see how do we determine the fixed carbon. So after the determination of moisture, volatile matter and ash, तीनों को निकालने के बाद जो रिमेनिंग कंटेंट रह जाता है वही फिक्स्ड कार्बन कहलाता है. सो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑल दीज एडेड टुगेदर. तो 100 में से इन सब को जो आपने डिटरमाइन किया इनको माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन. And the significance is that fixed carbon content increases from low ranking coals to high ranking coals, like from wood
और पीट टू एंथ्रेसाइट। क्योंकि आप ये जानते हैं कि लो रैंकिंग कोल से हाई रैंकिंग कोल में हमेशा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे फिक्स्ड कार्बन कंटेंट बढ़ेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी और अकॉर्डिंगली हम उसको हाई रैंकिंग कोल में क्लासीफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं। So higher the percentage of fixed carbon, greater is its calorific value and better is the quality of coal. So this is how we have determined the four important things which are related to proximate analysis. Now, another important analysis of coal is ultimate analysis. The basic thing is that this analysis gives us the information about the percentages of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, etc., which are there in the coal sample. So we are going to determine the percentages of carbon, hydrogen, sulfur, etc. So let's say we have considered here the determination of carbon and hydrogen. So as you can see that about 1 to 2 gram of accurately weighed coal sample is burnt in a current of oxygen in a combustion apparatus. This is the combustion apparatus. Carbon and hydrogen of the coal are converted into carbon dioxide and water respectively. So carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide, right? Similarly, hydrogen combines with oxygen to give water. So whenever there is the process of combustion, then we can see that carbon dioxide and water are formed. Now these gaseous products of combustion are absorbed in KOH and calcium chloride tubes respectively. So carbon dioxide is absorbed in KOH and water is absorbed in calcium chloride. So let us see that how it is determined. So this is the combustion apparatus. So when we are going to determine carbon and hydrogen, we can consider this apparatus. So this is the combustion tube. You can see that this is the combustion tube. In this combustion tube you have kept this pure sample, and when you start doing combustion, so gaseous products are formed. Now these gaseous products are passed through copper oxide pellets, so that the moisture or in any water content, if it is there, it is evaporated. So it is made anhydrous. इसको anhydrous बना देते हैं और ये जो gaseous products हैं दो ट्यूब्स में से U ट्यूब में से पास करा रहे हैं. So you can see this is the U tube containing calcium chloride and this is the U tube containing potassium hydroxide. So if the gaseous products are passed through this, यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो इसमें calcium chloride ट्यूब में water का absorption हो जाता है. So water is absorbed here and KOH ट्यूब में carbon dioxide का absorption हो जाता है, right? So increase in weight of both these U tubes may be used for the determination of carbon and hydrogen. So let's see how. So here you can see that carbon combines with oxygen to form carbon dioxide and this carbon dioxide is absorbed in KOH. तो KOH के साथ जब absorption होता है तो ये reaction हो रही है. and इसी तरह hydrogen combines with oxygen to form water. ये जो gaseous product है जब हम calcium chloride tube में पास कराते हैं तो calcium chloride water के साथ combine करके calcium chloride dot 7H2O का formation कर रहा है. तो इस तरह से जो increase in tube calcium chloride tube और KOH tube weight in increase in weight जो हो रहा है उसकी हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करते हैं. सो द फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल सैम्पल टेकन into 12 upon 44. 12 is the weight of carbon and 44 is the weight of carbon dioxide into 100. Similarly, percentage of hydrogen is equals to increase in weight of CaCl2 tube upon weight of coal sample taken into 2 upon 18. 2 is the weight of hydrogen and 8 is the weight of water into 100. So this is how we use two formulae to determine the percentage of carbon and hydrogen. Then comes nitrogen. Nitrogen का determination करने के लिए Geldar's method का use करते हैं. So Geldar's method के use में हम एक ये apparatus Geldar's apparatus का use करते हैं. So let us see about 1 gram of accurately weighed powdered coal is heated with concentrated H2SO4. अगर हम कोल सैम्पल को H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो इसमें जो भी नाइट्रोजन होगा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा. सो आफ्टर द सोल्यूशन, या यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इसका कंबशन हो जाएगा और ये सोल्यूशन जैसे ही क्लियर हो जाएगा इसको हम एक्सेस ऑफ KOH या NaOH के साथ हीट करेंगे और जिससे अमोनिया का लिबरेशन होगा. सो हियर यू कैन सी दैट अमोनिया इज लिबरेटेड व्हेन
the solution is treated with excess of KOH. तो KOH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो गई और अमोनिया का लिबरेशन होगा, एंड दिस अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड. H2SO4 हमने लिया हुआ है, उसमें एसिड में एब्जॉर्ब करा लेंगे. जो अनयूज्ड एसिड है उसका हम बैक टाइट्रेशन के थ्रू बैक टाइट्रेशन स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन के साथ कराएंगे, उसका भी हम डिटर्मिनेशन करेंगे. And then the volume of the acid used by ammonia liberated, that is used for the determination of percentage of nitrogen. For example, you can see that this is the diagram, and in this diagram you can see that this is the Geldols apparatus and this is the Geldols flask. This has a long neck. You can see that this has the long neck, and here you have taken organic compound plus concentrated H2SO4 plus copper sulfate and mercuric sulfate as the catalyst, and then the products of combustion, that is ammonia, is passed into the excess of NaOH. It is treated with excess of NaOH, and then ammonia is liberated, and this ammonia is absorbed in known volume of acid. So the volume of acid used is used in the determination of percentage of nitrogen. So what is that formula that we are going to use here? This is the formula. You can see percentage of nitrogen is equal to 1.4 into N into V upon W, where N is the normality, V is the volume of acid used for the absorption of ammonia, and W is the weight of coal sample taken. So just by using this formula, we determine the percentage of nitrogen. Now lastly, let us consider the sulfur determination. So sulfur is determined from the washings obtained from the known mass of coal used in a bomb calorimeter for the determination of a calorific value. यानी आपको अगर याद होगा, आप जब कैलोरीफिक वैल्यू के डिटर्मिनेशन में बॉम्ब कैलोरीमीटर में कोल का कंबशन कर रहे थे, तो उसमें जो भी वॉशिंग्स हैं वो आप ले रहे हैं, और उसमें जो भी सल्फ़र है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में. सो सल्फ़र इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फेट. अब इसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे. हम जानते हैं सल्फेट की डिटर्मिनेशन के लिए बेरियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है. तो ये जब बेरियम क्लोराइड का हम यूज़ करेंगे तो बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ, जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का सल्फेट है, एलिमेंट का सल्फेट है, उसके साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेगा. सो बाय नोइंग द weight of the barium sulfate precipitate formed, we can determine the percentage of sulfur. So percentage of sulfur is equal to small w upon capital W, 32 upon 233 into 100, where small w is the weight of barium sulfate obtained, capital W is the weight of coal sample taken, and then in that way we determine the percentage of sulfur, right? And yes, lastly we have to determine percentage of ash. Percentage of ash can be determined as we have done in proximate analysis, and percentage of oxygen can be determined with the help of this formula, like when percentage of oxygen is equal to 100 minus percentage of all the content that we have already determined, that is carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen and ash, all are subtracted from 100, and in that way we get percentage of oxygen, right? So today's lecture summarize three important things about the coal. We have taken into consideration an introduction of coal, and then classification of coal. We have classified the coal into basically 5 categories: wood, peat, lignite, bituminous coal and anthracite, considering anthracite as the highest quality fuel because it has the highest calorific value. And then analysis of coal we have considered today, which is in two ways, which is considered in two ways: proximate analysis and ultimate analysis. Proximate analysis determines the moisture content, volatile matter, then ash, and finally fixed carbon, while ultimate analysis determines the percentage of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, and finally oxygen content, and so on. So this is how today we have discussed, and these are some important questions that you can cover while considering this lecture. Define coal and explain various stages of qualification. So explain various stages of qualification. It involves biochemical stage and chemical stage, and then you can consider various stages of qualification, like you can involve the degree of qualification starting from wood and then ending up to the anthracite. Then write down properties of all 4 types of coal. Which type of coal is the best? You can consider all 4 types of coal, like peat, lignite, bituminous coal and anthracite.
What do you mean by approximate and ultimate analysis? How will you determine carbon and hydrogen in a coal sample? So here you have to describe the combustion apparatus, and then in Jaldal's method how you determine the nitrogen. So these are few important questions that you can cover while understanding this lecture. And then in upcoming lecture we will be discussing some important numerical problems related to the lectures 1, 2, 3 and 4, today's lecture. Thank you so much.